welcome you all to the opening ceremony of Bharatiya Bhasha Summer Camp, where learning meets heritage and culture meets language. We are deeply privileged to have amongst us the First Lady of the station, Mrs. Meenakshi Tyagi, who has graciously joined us as she is one of the parents as well. We extend a heartfelt welcome to you, ma'am. Ma'am, we are truly honored by your gracious presence. ಕಿರಣಿ ಬಿಗರಣಿ ಕುಠೋನ ಇಟ್ಟತೆ ನಾನು ಸಿಹಿರಣಿ ಚುಣ ಚುಣ ಚಮಳಾಟ ಚುಣ ಅರೆ ಚುಣ ಚುಣ ಚೂಡಿयों को चमड़ाट हाथ मार नाम तेरो लगो यो साथे सो मेरा मैं नाम तेरो लगो Warm and still the parents and the students are sitting here to watch the inaugural function of Summer Camp 2025, and I would like to thank Mrs. Meenakshi Tyagi, the First Lady of the station, for sparing your valuable time for us, for the students, and it is a real pleasure to having you here today. And to the students who have already registered for the summer camp, let me tell you this we are doing on the theme of Bharatiya Bhasha. We have chosen Gadwali and Kumaoni Bhasha, and we would like to take you on a journey during the summer camp to make you understand the culture, the cuisine, the various places that we have in Uttarakhand, and we would touch upon various, important aspects of Uttarakhand during this complete journey of summer camp. And to the students, I would like to say that
तेरी मम्मी कह रही थी कि आराम से आना, तेरी बहन है ना सुहाना, इसको आराम से लेके जाना है, मम्मी टीसीपी पे आएगी, बोला मम्मी आएगी। हमारे तो हमारी अभी करा कोई नहीं अभी
ये पूरा इतना ही मानना बोला पेंट ब्रश नहीं हाँ अभी नंबर जो भी अब सब बच्चों को इतना ही थोड़ा 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 यस मैम जब ये बहुत पहले जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मशीन्स वगैरह नहीं थी, तो ये बहुत ट्रेडिशनल वे में बनती थी। सारे सही जैसे ये येलो कलर का कपड़ा लेते थे, मतलब येलो कलर का भी कपड़ा प्लेन नहीं मिलता था, इसको हल्दी में मैरिज, दैट इज व्हाई इट इज सो ट्रेडिशनल मैरिज। इसको हल्दी में मिक्स करते थे, हल्दी के बाद इसको सुखा लेते थे। सो आई विल टेक यू देयर। ये हल्दी वाला कपड़ा आ गया हमारा, ठीक है। बेटा थोड़ा दूर हट गया। ये लो, अभी देखो ऐसा ही बन जाएगा जैसे इन्होंने पहना है। अब मुझे चाहिए रेड कलर का पेंट। अच्छा ये रेड वाला पेंट जो तुम्हारा छोटा वाला पेंट वो लाना। अब आप लोग ये बनाएंगे जैसे उन्होंने ये दिख रहा है आपको राउंड राउंड। अभी पहले से भी ऐसा 25 पैसे का कॉइन होता है, इधर ही लेके अब हमारे पास इससे भी छोटा कॉइन होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास उतना छोटा कॉइन नहीं है, तो ये शायद मेरे ख्याल से खाने की कुछ और चीज़ ले रखी है। इसको हम थोड़ा सा गीला करेंगे। कर लिया गीला, एक ब्रश इसके अंदर भी डाला, एक ब्रश इसके अंदर डाला। अब मैंने इसमें लगा दिया रेड कलर, लगा दिया। इसको इसी में पकड़ो, ठीक है। आप देखो साइड से लगाना शुरू करो। लग गया, ऐसे लग गया, ये देखो ये लग गया। ऐसे ऐसे करके आपको इसमें थोड़ा सा साइड में डिजाइन बनाना है।
या कोई और पूजा का सामान इसको बनाने का भी एक पैटर्न मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न शुरू करके बता देती हूँ। देखो बेटा, इसको ऐसे बनाते हैं। मैं इसको पहले रफ बनाऊंगी, बाद में इसको आप स्क्वायर करेंगे। अब जैसे मैंने ये स्ट्रोक बनाया ना, अब हम इसको धीरे धीरे इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस बनाएंगे ऐसे। हाँ, श्रीयंत्र, एक यहाँ भी वही बनता है श्रीयंत्र। अभी ये आपको श्रीलता में very lovely good morning to all of you. Namaste and heartfelt welcome to all. I am Srishti. And I am Nisha, and together we are honored to welcome you to the closing ceremony of the Bharatiya Bhasha Summer Camp 2025. Come to the closing ceremony of summer camp, and
And I think everybody knows that we have celebrated this summer camp on the theme Bharti Bhasha. Now, the Bharti Bhasha that we have selected for this was Garhwali and Kumaoni. And I think the students who participated in this particular summer camp, they must have learned a lot about the Kumaoni and Garhwali culture. Did you learn a lot of things about this? And I think you are standing in sun, so that is why we thought we'll give you an umbrella also, right? And see, this Garhwali and Kumaoni culture is a very ancient culture. You must have seen lot of pictures about it, lot of presentations were there, and some movies were also there, and you must have enjoyed it. And the art and craft, the cultural heritage of Kumaon and Garhwal is very rich, and you must have learnt a lot. Yesterday we had a community lunch also, in which the various cuisine of Garhwali and Kumaoni, they were also prepared. Did you like it? Everybody liked it? You learned how to make it also? Did you contribute? Yes. So that was basically the theme was to introduce you to a different culture with which you were not so familiar earlier with, right? In case you found it very interesting, you must, learn more about it. Why? Because you are studying in a school, APS Raiwala, which comes in Uttarakhand, and the basic language and the culture which is being followed by the people out here is they are following either Garhwali or Kumaoni. So that was the main aim, because you being army kids, your fathers are posted to various locations in India, and you get a chance to see various cultures. So that was another reason we thought of giving you some idea about this particular culture. So I hope everybody enjoyed, and my best wishes to everyone.